का आह्वान करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम का आगाज जरूर करूंगी, लेकिन I think it is my proud privilege to be present amongst all of you here and being invited by Indira Gandhi Government Dental College and to be part of this 1 week long Azadi Ka Amrit Mahotsav. From the deep chords of my heart, I extend my gratitude to the principal of the college, Dr. Rakesh Gupta ji, worthy co-speaker and recipient of Vishisht. Guru Granth Sahib was being carried, so he carries on his head wearing a turban. He is otherwise clean shaven. He wears a turban and carries that Guru Granth Sahib at the rituals of Sikhism. As per the जो डायरेक्टिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और यूटी जम्मू एंड कश्मीर का कि 11 से 17 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव 75th ईयर की सेलिब्रेशन के लिए हमें पूरा वीक लॉन्ग सेलिब्रेट करना है, तो हम इस इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड किया कि हम 10th से लेके आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का दिन हमने 3 जो बेस्ट स्पीकर्स हैं उनको बुलाया है। उनमें से एक वॉर वेटरन हैं, ही इज़ एक्स ब्रिगेडियर ऑफ द आर्मी। ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंसेस with the student of our institution, and he will help them in character building, what can they do for the country. ऐसे ही हमारे पास एक renowned historian हैं जो प्रोफेसर हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर सिंधु. She will also talk about the people who have immensely contributed for the independence of this country. और हमारे पास इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के जम्मू यूनिवर्सिटी के भी एक प्रोफेसर हैं, वो भी अपने व्यू पॉइंट जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कंट्रीब्यूट किया, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो उनका भी लेक्चर होगा. एंड आफ्टर द लेक्चर देयर विल बी ए क्वेश्चन आवर फ्रॉम द स्टूडेंट्स, सो दे कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम दिस veterans, especially from the war veteran, their experiences they can share. उसके अलावा हमने कल हमने रखा है एक ऑनलाइन ई पोस्टर कंपटीशन. उसमें हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स और स्टाफ जितना भी है इंस्टीट्यूशन का अलग अलग अपने आज़ादी के ऊपर डिस्प्ले करेंगे, अलग अलग डिपिक्शंस करेंगे एंड दे स्पीक ऑन दोज पोस्टर्स. और 13th को हमने क्विज़ प्रोग्राम रखा है ऑन द आज़ादी. उसमें सारे स्टूडेंट्स स्टाफ वो भी अपने अपने हम क्वेश्चनरीज बनाए हैं और उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो उनसे पूछेंगे सो दैट वी शुड नो कि उनका भी कितना दे नो अबाउट किस लोगों ने कितनी कंट्रीब्यूशन की है, कैसे हम यहाँ पे बैठे हैं और आज हम आज़ादी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं. सो क्विज़ कंपटीशन उसी प्रोटेक्स्ट में हमने रखा है. 14th को हमने मैराथन रखी है जिसमें मोर देन 200 स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन विद द फ्लैग इन देयर हैंड्स दे विल डू द मैराथन. तो वो सुबह का प्रोग्राम है 14th को. 15th को हमने यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी रखा है इंस्टीट्यूशन में and followed by the lunch in the mess of the students. उसके अलावा हमने 17th को इसको कल्मिनेशन पे रखा है. 17th को हमने कल्चर प्रोग्राम्स रखे हैं, हमने डांस रखा है on the आज़ादी, everything on the theme of आज़ादी. This is being done by the students, done by the staff, maybe the paramedical staff, maybe the paradental staff, maybe the fourth class multitasking employees, whosoever who wants to participate. Everybody is being asked to participate. Then singing competition is there, then drama is there. हर किस्म का प्रोग्राम है, कोई 3-4 घंटे का प्रोग्राम है. इसके अलावा हमने उसी दिन हमारे जितने लोग हैं डेंटिस्ट्री के
جو اس انسٹیٹیوشن سے ہماری فیکلٹی میں تھے اور اسٹاف میں تھے جو ریٹائر ہو چکے ہیں، ہم نے ان کو بھی انوائٹ کیا ہے. ہم ان کو بھی فیلسٹیٹ کریں گے، ان سے بھی بلوائیں، کیونکہ وہ تھرڈ جنریشن ہے جنہوں نے یہاں کی یو ٹی اسٹیٹ میں لوگوں کی اورل ہیلتھ اور ڈینٹل ہیلتھ کے ویلفیئر کے لیے کام کیا ہے. دوسری جنریشن جو ہم ہیں، جو ابھی ہم کام کر رہے ہیں، اور تیسری جنریشن جن کے جو اپنا پروگرام کو ڈسپلے کر رہے ہیں. جو تینوں جنریشنز ہوں گی، تو دس از ہاؤ وی آر سیلیبریٹنگ 75 ایئر celebration with the dentistry, the people who have retired, people who are presently working here, and the students who are likely to take over the dentistry in near future. تو ہم ان سب کی سروسز جنہوں نے جتنا بیٹر اس کے لیے کیا ہے کنٹریبیوٹ، ان کو ہم ایکنالج بھی کریں گے، ان کو فیلسٹیٹ بھی کریں گے. تو اس قسم کا ہم نے کلمینیشن پروگرام پہ رکھا ہے. تو کلچر پروگرام اس دن 3 گھنٹے کا ہوگا، اس کے بعد فیلسٹیشن ہوگا، دین فالوڈ بائی دا ہائی ٹری اینڈ آل دیٹ. تو دس از ہاؤ وی پلانڈ ایکٹیویٹی فار دا انٹائر ویک ٹائم. تو ہمارا مین موٹو وہی ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں دے شوڈ کم ٹو نو کہ کتنا مشکل سے ہم نے آزادی لی ہے اور اس کو ہم نے کیسے سیف گارڈ کرنی ہے، اور اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. تو یہ گورنمنٹ کے جو ڈائریکٹیوز ہیں، جو نریندر بھائی مودی پرائم منسٹر جی کے ڈائریکٹیو ہیں، یا جو ہمارے یو ٹی اسٹیٹ گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈائریکٹیوز ہیں، ان کو فالو کر کے ہم یہ ساری سیلیبریشنز ہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ لوگوں کا بھی دھنیہ واد کریں گے، کیونکہ اب میڈیا میں جو ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہوں گی، یہ لوگوں تک بھی میسج جائے گا، لوگ بھی اس سے اتساہت ہوں گے، ان کا بھی مائنڈ سیٹ اس میں پازیٹیو ہوگا، وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں گے. تو آپ کا بھی ہم تہہ دل سے دھنیہ واد کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.